Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. High-profile Talegaon Panchayat to go for polls on 28th April. Over 19,000 residents eligible to cast their vote. Aam Aadmi Party criticizes ruling BJP for yesterday's turmoil at Kujira Educational Complex. Attribute youth's violent act to soaring unemployment in the state. Panjim police arrest notorious Delhi duo for breaking into a house in Tiswadi. Investigation now on to find out possible links to other house break-ins in the state. And now for the news in detail. 19,349 voters will exercise their franchise in Talegaon on April 28th. 9,206 men and 10,143 women will cast their votes on April 28th for the high-profile Talegaon Panchayat for the long bastion of the Talegaon strongman Atanasio Babush Montserrat. At present, Babush is representing the capital city Panjim while his wife Jennifer Montserrat represents Talegaon constituency. The Panchayat has been dominated by the Montserrat family for quite a long time. The elections timings are between 8 a.m. to 5 p.m. Panchayat elections are normally not held on party lines and voting will be on ballot papers. 4 out of the 11 wards, 3, 4, 6 and 9, are reserved for women. Ward number 1 is reserved for OBC and ward number 5 has been reserved for ST. Sangeeta Oli for Goa 365. The Aam Aadmi Party has criticized the government in light of yesterday's turmoil at the Kujira Educational Complex. After witnessing a youth wielding a knife and intimidating a rival group, the Aam Aadmi Party has linked this incident to the lack of employment opportunities for the youth. Let's hear what State Party President Francis Coelho had to say on the matter. काल व्हिडिओ पळय व्हायरल जाल्ले ते सगल्यांनी पळयल्या ते आमकां न्यूजारूय येयल्या सगल्यांच्या वॉट्सॅपारूय येयल्या थिंगा कितें घडलां आनी आमी कितें पळयलां ते एक थिंगसरलो पळय यूथ आहा तो सुरी घेवन बाकीच्या भुरग्यां फाटल्यान धांवता आनी सुरी घेवन तो धमक्यो दिता आनी हें आख्खें व्हायरल जालां आनी लोक आख्ख्या गोंयान शॉक जाला सामको की कुजिरा कॉम्प्लेक्सान बाकीचे पळय भुरगे आहा ते शिकोंक वयता आनी थिंगा बाकीचे भुरगे आहा पळय थिंगा एकलो भुरगो सुरी घेवन भोंवता आनी सुरी घेवन लोकांक हें करता धमक्यो दिता हें पळोवन लोक सारको अजाप जाला आनी लोक विचारूंक लागले हें कितें घडटा हें कितें चलना म्हणून आनी आमी तेच पळोवन आमी सगळे अजाप जाल्ले म्हणून आमी म्हणलें आमी मातशें फायंड आवट करुया मातशें इन्वेस्टिगेट करुया तर नितीन थिंगा शिकता आनी थिंगच्या कॉलेजीन आहा तो आनी हें पळय घडलेलें तें आख्खें तेणें आमकां मातशें हेल्प केलें फायंड आवट करपाक की कितें प्रॉब्लेम जाला तें हें आमी इन्वेस्टिगेशन केलें आमी लोकांक विचारले उपरांत आमकां कळलां की ते आदल्या दिसा बारीक कितें केस्तांवां जाल्लीं दोग भुरग्यांची बारीक केस्तांव म्हणजे कितें कोण शॉपान आहलो कोण दुसरो एकलो तालिगांवचो एकलो भुरगो एकदम डिसेंट भुरगो तो तालिगांवचो कोणाच्या एकान पडना कोणाच्या दोनान पडना केन्नाच तो म्हणजे खूंय अहें झगडीन ना केन्ना कांय वायट करना एकदम सिंपल प्लेन भुरगो तो तालिगांवचो आमच्या थिंगा रुईच्या थिंगा कारांजाने रावता तो भुरगो ओके शिकपाक बरें खूंय वायट लोकां बरोबर भोंवना कांय ना त्या भुरग्याची तो शॉपान आहलो भायलो कोण तालिगांवच्या भायलो कोण भुरगो आहलो तो थिंगा शॉपान येयलोलो आनी तेंचें कितें बेश्टें धक्कम दुक्की जाली म्हणजे एकल्याच्या शोल्डर आदवलो आनी कितें बारीक तहें कितें घडलें आनी थिंगा तेंची बाचाबाच जाली ते बाचाबाच दुसरो पळय भुरगो आहा तो तालिगांवच्या भायरचो तो दुसरे दिसा तेंच्या कॉलेजीन आनीक 4 भुरग्यांक घेवन तेंच्या कॉलेजीन पावलो थिंगा झगडीं करपाक सुरीबा घेवन आनी बाकीचें कितें जालां तें तुमी सगल्यांनी पळयलां आनी आमी आतां मागीर पुलिशेन त्या भुरग्यांक आयज अरेस्ट केला आनी खंय तरी येला आनी मागीर कितें तरी तेंची कारवाय चालू आहा पूण तोय भुरगो आमी तेंय फायंड आवट केलें तो भुरगो कोण तोय भुरगो व्हडलो कांय गुंडा न्हू तोय भुरगो व्हडलो कांय म्हणजे पिड्यार भुरगो न्हू तो
पूण तो फ्रस्ट्रेटेड आहा तो भुरगो आनी आमी ते इन्वेस्टिगेट केल्या उपरांत आमकां सामकें कळलां की तो भुरगो सामको कांसार जाल्लो भुरगो सामको फ्रस्ट्रेट जाल्लो भुरगो आनी तेजे बरोबर वांगडी पळय येयलेले ते भुरगे तोहलेच दे हॅव ड्रॉप्ड आउट म्हणजे स्कुलान आहा केन्ना स्कुलान ना तेंचे कडेन जॉब्स ना तेंच्या मायपाय कडेन जॉब्स ना म्हणून ते सारके बेजारले आनी मागीर ओहली हरकतां ती करूंक लागता ते भुरगे अनएम्प्लॉयमेंट भुरग्यांक ना कांय कामूच ना तेंकां इन इंग्लीश नो तेज अ सेईंग कॉल्ड द आयडल मायंड इज द डेविल्स वर्कशॉप कोंकणीन हेजो अर्थ कितें जालो की तोकलेन कांय ना चिंतपाक आनी करपाक तेन्ना जिद्योक तोकलेन येता आनी तुज्या तोकलेन बसता आनी तोहली कामां जिद्यो करूंक लायता तुका आयडल मायंड इज द डेविल्स वर्कशॉप इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ह्या भुरग्यांक कोणें कितें फ्युचर आहलें कितें आहलें म्हणजे हांव हें शिकता म्हाका जॉब मेळपाचो आहा म्हणून त्या जॉबाक हांव ट्रेनींग करता कितें तरी दे हॅव समथींग टू लूक फॉरवर्ड टू देन दे वोंट बी फ्रस्ट्रेटेड दे वोंट कम आउट एंड डू दीज कायंड ऑफ एक्टिविटीज दीज एक्टिविटीज वी आर सींग ऑल अक्रॉस गोवा हे आतां आमच्या हिंगा खुजिरा कॉम्प्लेक्सान स्टुडंटांच्या बरोबर पळय जालां तें आख्ख्या गोंया ओहली कर्तुतां चालू आहा कित्याक लोक पळय यूथ आहा न्हू एकदम यंग पळय यूथ आहा तो सामको फ्रस्ट्रेट जाला तांकां कांय फ्युचर दिसती पडना तांकां कांयच म्हणल्यार जॉब ना कांयच देर इज नथींग फॉर देम पीपल आर आस्किंग वॉट अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन अरे होम मिनिस्ट्री इज विथ द सीएम नो इफ दॅट बॉय हू वॉज ब्रँडिशिंग दॅट नायफ तो सुरी घेवन भोंवतालो तो भुरगो ताका कितेंय तरी भंय आहली हेजी पुलिसाची जाल्यार तो कोत्तलो आहलो तें कांयच ना भंय ताका कित्याक होम मिनिस्ट्री सीएमा कडेन आहा सीएम होम मिनिस्ट्री घेवन न्हिदला पुलीस कितें करता ताका पडलेलें ना दुसरे कडेन कोण इलेक्शन कमिशनान कोण फ्लायंग स्कॉट दवरल्या ते कोणाचे 16 लाख जप्त करता एक्स्टॉर्शन करता आनी पळता आतां तांकां सस्पेंड केला आतां तांकां हें केलां पूण भंय कोणा कडेच ना होम डिपार्टमेंट इज नॉट फंक्शनींग ओनली कित्याक कडेन केन्ना केन्ना जॉब ना भुरग्यां कडेन केन्ना केन्ना जॉब ना आनी जॉब वयता सगळे कोण मिनिस्टराक लागीं आहा तांकां जॉब वयता कोण सीएमा कडेन लागीं आहा तांकां जॉब वयता पूण कोणाक जॉब डिजर्वींग जाय तांकां कांय जॉब वचना आमकां सीएमान इलेक्शना आदीं सांगलेलें 10,000 जॉब दिता 10,000 गव्हर्मेंट जॉब दिता तेजें कितें जालें म्हणून आमी विचारूंक सोदता सीएमाक कितें जालें ते 10,000 जॉब कितले जॉब तुमी पावयल्या कितले जॉब जाल्या कांय दिवंक ना एक 2-3 वर्सां आदीं निती आयोग पळय दिल्लीन आहा निती आयोगान आमचो पळय लेबर एम्प्लॉयमेंटाचो डेटा आहा तो काडून पब्लीश केलेलो आनी तेणी म्हणलेलें इन गोवा देर इज 1.1 लाख अनएम्प्लॉयमेंट रोकडेच हिंगा सीएमान प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी म्हणला नो दॅट इज रॉंग डेटा म्हणजे कितें तो म्हणटा ना ते कोणाक जॉब मेवल्याय तेणी ते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाचे आमची नांव काडूंक ना कोणे एक्स्ट्रा एलिजिबल ना तेणी आमची तेंची नांवां घातल्या कोण 15 वर्साची भुरगीं आहा तेणी आमची नांवां घातल्या ओहले म्हणून तेणें फालतू म्हणून लोकांक चिंतोंक सोदलें की ना अनएम्प्लॉयमेंट 1.1 लाख गोंयांत ना आतां हें गजाल करता हांव ते 3 वर्सां आदींची गजाल आतां ते अनएम्प्लॉयमेंट आनीन वाडला Dylan Rodriguez, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Police have apprehended a pair of thieves responsible for a house break-in in North Goa. According to a police press briefing, the duo meticulously planned the heist after scouting the target location, executing the crime and fleeing on the same night. Law enforcement is currently probing potential connections between the duo and several other reported house break-ins across the state. जिम पुलिस स्टेशन ने एक बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके एक 2 चोरों को पकड़ा है जो काफ़ी एक्सपर्ट्स थे घर के अंदर घुस के सामान चोरी करने में। 21 मार्च को पेंजिम पुलिस स्टेशन के अंदर एक हमने केस रजिस्टर किया था अंडर सेक्शन 454 एंड 380। इसके अंदर कंप्लेनेंट ने ये बताया था कि दिन चोरी की है और उनका गोल्ड का सामान लेके चले गए हैं। तो जैसे ही हमें ये सूचना मिली थी इसके अंदर हमने स्पेशल टीम का गठन किया। वी हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल टीम एंड द टीम वाज टास्क्ड टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ एविडेंस, सीसीटीवी फुटेजेस और टेक्निकल सर्वेलेंस किया गया और जो पहले कोई क्रिमिनल्स जो ऐसे एक्ट करते हुए बंद हुए हैं उनको उनकी हमने रिकॉर्ड्स चेक किए
और ये सब एफर्ट्स की वजह से वी वर एबल टू arrest 2 persons. They have been identified as one Yasin. His age is 45 years old. He is a resident of Loni, Ghaziabad. The second accused who has been arrested is one Jamil Ahmed. He is resident of again Mustafabad in northeast Delhi. He is 45 years old. इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी इस केस के अंदर जो इनिशियल इंटेरोगेशन से पता चला है वो ये था कि ये लोग दिल्ली से पहले बॉम्बे गए, बॉम्बे के अंदर इन्होंने मुंबई में कुछ चोरियां की, उनसे हम डिटेल्स ले रहे हैं और मुंबई पुलिस के साथ ऑल्सो वी आर गोइंग टू शेयर ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. फ्रॉम मुंबई देन दे केम टू गोवा वाया ट्रेन. They got down at Madgaon railway station. उसके बाद they were searching for a place जहाँ पे इस तरीके से उनको कुछ चोरी करने का मौका मिले. इस घर को उन्होंने जब शॉर्टलिस्ट करके इसको चोरी को अंजाम दिया और चोरी करने के बाद तुरंत ये ट्रेन के रास्ते से गोवा से दिल्ली चले गए. दिल्ली में जाके इन्होंने अपना ये स्टोलन प्रॉपर्टी को एक संजय वर्मा जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला है उसको बेचा. वो इज बेसिकली अ गोल्ड स्मिथ सुनार. और इसको थर्ड पर्सन संजय वर्मा को वी हैव आल्सो अरेस्टेड एज रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी. सो टोटल वी हैव रिकवर्ड गोल्ड ऑफ अराउंड 150 grams which is valued at around 9 lakh rupees. And in recent times this is one of the biggest recoveries of stolen goods which has happened in Goa. एंड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इसके अंदर काफ़ी इंटेंसिव काम किया गया. हमारी टीम्स दिल्ली गई और पूरे गोवा के अंदर उन्होंने सीसीटीवीज़ को ट्रैक करके इनको कहाँ से आए थे, कहाँ को ये गए, वो सारी डिटेल्स निकाली गई. रेलवे के माध्यम से भी इसको देखा गया और बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स वी वर एबल टू वर्क आउट दिस केस. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. Now for some weather updates. Expect higher than normal temperatures over the coming week, as IMD's latest weather update indicates a 1 to 2 degree rise in maximum temperature. But hold on, relief might be on its way. There's a chance of light rain over the weekend with below average temperatures into the second week of April. Let's dive into the details. Tomorrow anticipate partly cloudy skies with temperatures hovering around 34 degrees Celsius during the day and about 25 degrees Celsius at night. Some shallow fog and haze may greet us in the morning hours. Looking ahead, IMD forecast light rain in isolated regions of the state on the 8th, 9th and 10th. Partly cloudy skies likely on Thursday. Light rain expected on the 7th, 8th and 9th. Shallow fog, haze likely in the morning. Maximum and minimum temperatures 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Bureau Report Goa 365 with insights from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.